Hi, I hope everyone is fine. So today we will be talking about one of my favorite question, which every second person used to ask from me. The question is how to become uh, best or good, better, best, data engineer or a data architect. So ये वाला क्वेश्चन हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो हमसे पूछता है कि क्या चीज़ हम करें तो एक बेस्ट डेटा इंजीनियर और डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द बेसिक्स के जब भी कोई भी बंदा आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक बेस्ट डेटा इंजीनियर बन जाएं और बेस्ट डेटा डेवलपर बन जाएं। सो तो बेस्ट डेटा डेवलपर के लिए और डेटा इंजीनियर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले उसको बेसिक्स he must know all the basics about regarding these three things. One is SQL, one is PySpark, and the other is Python. So SQL and Python are very important for any data developer and data architect. But एक और चीज़ है जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि न्यूबी कोई भी नया रिसोर्स मार्केट में आता है और अपना करियर करना चाहता है, वो एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको समझाया जाता है कि आप क्या करें, एसक्यूएल सीख लें। ठीक है, एसक्यूएल के नॉर्मल जो सिंटैक्स है वो जॉइंस, प्रोसीजर्स, इंडेक्सिंग, दिस लॉट ऑफ स्टफ। ठीक है, वो कहते हैं कि आप ये चीज़ें सीखें। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि आप जब ये सीख लें, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द बेसिक्स, start Python. So after starting Python, I used to wrote all the basics, like what are variables, what are lists, what are dictionaries, uh, and what are classes, inheritance, all the basics to advanced concepts. But एक चीज जो कि वो मिस करते हैं वो है हाउ टू इंटरेक्ट विद सीपीयू एंड मेमोरी। आपने एसक्यूएल भी सीख लिया, आपने पाइथन भी सीख लिया, आपने स्पार्क भी सीख लिया। ठीक है, अ, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीख ली, बट अगर आपने सीपीयू यूटिलाइजेशन और मेमोरी और कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर आपने नहीं सीखा, देन यू विल नॉट बिकम गुड डाटा डेवलपर और गुड डाटा इंजीनियर और गुड डाटा आर्किटेक्ट। बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस इज के आप in normal day work, we used to come across a different what we say a different size of uh, data। हमारे पास different size of data आता है, उसको ingest करना होता है, उसको अपने पास लेकर आना होता है, and after that we have to process that data। So first of all, ingesting that data and processing that data, in both of these processes, we need to look forward to CPU utilization and memory utilization। अब हम आगे जाकर इसी बारे में बात करेंगे कि पाइथन और एसक्यूएल, नेक्स्ट जो हम चीज़ें करेंगे उसके अंदर पाइथन, एसक्यूएल और पाइस्पार्क फ्यूचर में हम देखेंगे कि इसके साथ किस तरह ऑप्टिमाइज वे में हम 10 टेराबाइट का डेटा किस तरह प्रोसेस करते हैं, 20 टेराबाइट का डेटा किस तरह प्रोसेस करते हैं, जीबीज में डेटा किस तरह प्रोसेस किए जाते हैं एफिशिएंटली। क्योंकि डाटा जो है वो सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि डाटा जो है वो एक साइज का हो। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए हमने जो रिक्वायरमेंट देनी होती है टू द कस्टमर, इट शुड बी वेरी कंसाइज, इट शुड बी मीनिंगफुल। कि ऐसा ना हो कि हम उसको ज़्यादा सीपीयू और रैम, रोम, इन चीज़ों की हम डिमांड करें और वो चीज़ें और बर्डन हो जाएं कस्टमर के ऊपर, और या वो ऐसा क्वेश्चन कर लें कि व्हाई डू यू नीड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग फ्रॉम अस।
So we are right now we are discussing very high level things. So sorry for that. बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि कोड करना इज नॉट अ बिग डील इन नाउअडेज. कोड को एफिशिएंटली कोड करना इज द आर्ट. और ये मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने ये चीज देखी है कि आप इफ समवन गिव्स यू अ टास्क, यू go to ChatGPT or anything else. You use different resources to fill all the gaps and complete that task. But the major issue which is of memory consumption and CPU utilization. So I will be discussing it in upcoming slides. Okay, so let me show you an example. जब आप कोई भी पाइथन की प्रोग्रामिंग आपने सीखी है पहले, ठीक है, पाइथन की प्रोग्रामिंग आपने सीखी, आपने बेसिक सीखे, ठीक है, लेकिन आपको अगर इसकी सारी बेसिक्स टू एडवांस कंसेप्ट इन डेप्थ नहीं पता, ठीक है, तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, बट वो मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा कर लेता है. मैंने कितने ज्यादा प्रोग्रामर, कितने ज्यादा यूज केसेस ऐसे देखे कि जिसके अंदर आउटपुट तो आती है लेकिन इट कॉज लॉट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड कॉज लॉट ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, जिसकी वजह से आपकी जो पाइपलाइंस है वो भी खराब होती है अक्सर. और डिफरेंट तरह के जो है ना इश्यूज हमारे पास फेस होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू विद दिस एग्जांपल. For example, if you are given, this is a simple scenario to explain what today we are talking about. So, if we are given a input in integer form and we are asked to uh, find positive, negative, and zero. If we are having a positive number and we should print positive, and we should, whenever we come across a negative number, we should write negative, and whenever we come across zero, then we should write zero. So I have written two different style of programmings code in front of you. One is the normal way which a newbie, when enter in uh, daily real tasks, he used to think about it. The other is a little advanced. So th these two functions have different execution cycles. Like it will not take that much. Both will be having different execution time as well. For example, code 1 will take less time, and code 2 will take more time, because the reason behind this is that we are also using logic logics in this logical operators, and also we are using this plus signs, concatenation. So this concatenation is an other overhead over it. So this will be not a good symbol of good programming. अगर कोई इसको सीनियर रिसोर्स देखेगा तो वो जाहिर सी बात है वो बोलेगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बट फॉर नाउ इट विल नॉट डू दैट मच गुड एग्जीक्यूशन. अच्छा, अगर हम थर्ड इसकी ही थर्ड के पास जाए ना कि ये तीसरा किस तरह एग्जीक्यूट होगा, तो फिर हमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिटर्न जो हुआ हुआ है वो एक बहुत ही तरीके से जो है ना एक कोड लिखा है मैंने, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन मैंने यूज की है, वेरी शॉर्ट कोड मैंने यूज किया है, एंड दिस विल बी वेरी गुड एग्जीक्यूशन एज वेल. इसकी एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत ज़्यादा कम होगा. But when we come towards the fourth program, we are using a NumPy uh, library to solve this issue, and we are using list comprehension as well. Uh, this program is good for large amount of data when we come across arrays, but for now it will be not a good choice to be taken. So
अब हर एक प्रोग्राम जो बनता है, ठीक है, जब भी हम सीपीयू यूटिलाइजेशन की सोचते हैं, ठीक है ना, हम सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो ये होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को रन करें, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम वर्क किस तरह करेगा. हाउ विल दिस प्रोग्राम वर्क? So if I have installed a window OS system, so OS will be orchestrator for all the tasks, and once I write this function, the function will be uploaded to memory. ठीक है? This function is uploaded to memory, and CPU will be having 3 or 4 tasks. Number one, it will first of all fetch the definition of function. The second thing it will be doing is decode the function, what this function is going to do. Third thing which this CPU will be doing is that it will execute and store the resultant data, which is this return. This return, CPU will try to store this return in the memory. And after all the tasks done by the CPUs, OS will ping the IO to execute this the output to the monitor. So output will be seen in the monitor. So this is the whole cycle. If we don't know about how the CPU and memory works, we will not going to do any sort of programming or any sort of problem solving in our this project or any project. So moving ahead to next program. So what this program says that whenever we have integer type input, and we have to uh, find out all the values which are divided by 3, we have to print ayas on top of it as a print, and if there is any value which don't uh, fully divide on 3, it will print the number in form of string. So there are 3 to 4 execution of I have written 3 to 4 execution of this one problem. uh, one will be 2 hour fast because there are no overheads. See? And the last one, which I have denoted it as slow, it has some overheads which make it slow, a little bit slow, but in real time, little slow is very slow. So we used to avoid such things. Okay, so the next program which we are going to solve it is we are given text of alphabets, string, and we have to first check that uh, we have to split the text with space, and after that we will be taking the first letter. You can read out this what is the requirement. And let me know in the comment what do you think about it, what do you think with how to solve this question, if you have any new solution other than this. And please write in the comment box as well how to solve this question. If you have ever solved this question, please solve it. Okay, आप सॉल्व करें इसको, और इसके रिजल्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दिखिएगा. Okay, so moving ahead, the first will be slow because there are a lot of overheads if conditions. Okay, but there are a lot of if else, but the only thing which I want to share is that कि ये जो पहला जो प्रोग्राम लिखा है मैंने, वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम चीजें जो है ना यहाँ से निकालेगा. ठीक है, मैक्सिमम फंक्शनैलिटीज इसके अंदर डिफाइन की है मैंने. बट द बिगेस्ट इशू इज के कभी कभार आपको ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं चाहिए होती हैं, आपका प्रोग्राम वैसे भी रन हो जाता है. सो अगर आपका प्रोग्राम ऐसे ही रन होता है, देन लेट इट गो.
that the other functionality removed. Number one. Number second, if there is any if you're given a task and you think that you should do some uh, other aggregation, like other tasks, other functions, use other functions or loops as well, then I would say कि आप जो है ना इसके इनबिल्ट फंक्शन जो है जैसे स्ट्रिंग है उसका अपना इनबिल्ट फंक्शन होगा, आप उसको यूज करें। ठीक है, जैसे इंडेक्स है इसका अपना फंक्शन है। ठीक है, फाइंड डॉट फाइंड इसका अपना फंक्शन है। अगर आप ये चीजें यूज करेंगे तो फिर आपका जो कोड है वो ज्यादा तेजी से रन होगा। सो दिस वन इज स्लोएस्ट, okay, as I have already told you that has a lot of overhead. This is little fast because we have been using while loop. So in while loop it will do iteration until we find first space, and once we find first space we have to print that value. So uh, whenever we find first space at first iteration or second iteration, we have to print that into the print monitor. So that's why it has a little fast execution than the previous one. So the other one is the second last one is in this we have used index. By index which we mean that जहाँ पर भी हमें स्पेस देगा हम वहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको इंडेक्स का वो वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद उसको गेट कर लेंगे। one more thing is this, the last one. ओके, सो दिस विल बी वेरी सुपर फास्ट। ठीक है, ये बहुत तेज होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने बिल्ट इन फंक्शंस इसके यूज किए हैं। सो बिल्ट इन फंक्शंस जो है पाइथन के, वो यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेम इज द केस विद एसक्यूएल, सेम इज द केस विद स्पाइसपार्क, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दीज लॉट ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर। ठीक है, and for more such content or such videos, please subscribe to my channel, and let's hope for the best. I hope कि मेरा जो कंटेंट है उससे आप एक बहुत अच्छे डेटा इंजीनियर और डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।